Hello everyone, welcome back to Nucleotides Biology Discuss. Today we have to start another paper of your plus 3 first semester, that is your biomolecules and cell biology. Biomolecules and cell biology रे पहला मैं डिस्कस करमा cell biology and cell biology complete है साला परे हमें डिस्कस करमा biomolecules बाबत रे. तापर देखो हमर प्लस 3 फर्स्ट सेमेस्टर रो ऑलरेडी हमें कंप्लीट कर सारला न माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन and only दुईटा लाइफ साइकिल अच्छे इन फाइकोलॉजी सेक्शन रु माइक्रोबायोलॉजी एंड फाइकोलॉजी अंडर रे हमर माइक्रोबायोलॉजी टोटल सरी सारी छे एंड फाइकोलॉजी रो आ दुईटा लाइफ साइकिल अच्छे एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफन रे जेने कि हमें विद इन नेक्स्ट वीक रे हमें सेटा के कंप्लीट कर दमा बट हमें आउट पेपर भी स्टार्ट करू थो जेने कि बायोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल बायोलॉजी ओके सो सेल बायोलॉजी रे आज रो क्लास रे हमें डिस्कस करमा व्हाट इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द सेल बायोलॉजी. Then we have to discuss about the cell theory and another one, that is the types of cell. One is the prokaryotic and eukaryotic cell. Okay, so let's discuss about this. देखो हमर सेल बायोलॉजी कांसेप्ट जेते बेले आछी सेल बायोलॉजी माने हला काना that is the study about the structure and function of the cells. Okay, cell biology हला हमर काना the branch of biology, the branch of biology which deals with the study about structure and function of the cell. Structure and function of the cells. Okay, सेल रो स्ट्रक्चर और फंक्शन बाबत रे जेन ब्रांच रा में डिस्कस करू छु जेन पेपर रा में डिस्कस करू छु ताके कहू छु हमें कंप्लीट करी दैट इज कॉल्ड योर सेल बायोलॉजी. ओके तब और सेल कहा के कहू छु देखो सेल ता होचे हमर काना दैट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल होचे हमर काना दैट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल ता हला हमर काना दैट इज योर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. काना कहला दिस इज योर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ all living organisms. Okay, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जे देखमा समांतर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा के कहमा दैट इज योर सेल. काना कहला देखो बिल्डिंग ब्लॉक्स माने का बिल्डिंग माने बनबाटा काना बनबाटा हम और गोटे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कहा के नेकरी बने छी गोटे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ सेल. ओके कैसे भी गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म धरला सपोज गोटे ह्यूमन बीइंग जदी हमें कंसीडर कला सपोज इटा गोटे ह्यूमन बीइंग हला ओके ह्यूमन बीइंग रो जिनसे भी पार्ट्स देखमा सब जगह हमर काना प्रेजेंट আছে ऑल द पार्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ सेल्स. जिनसे भी पार्ट्स देखु छु सब जगह हमर काना प्रेजेंट আছে सेल प्रेजेंट আছে. जाहि देखो every body parts that are made up of number of cells. जिनसे भी पार्ट्स देखूं all these are parts that are made up of a cell. तो सेल द्वारा बिल्डिंग है चे कहा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेते लगी सेल के कहला में कामल करी दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. गोटे प्लांट देखूं गोटे प्लांट रे तार जदी कैसे भी पार्ट्स देखला गोटे प्लांट रो सपोज लीव्स कथा में डिस्कस करला जदी रे प्लांट हला एंड प्लांट रो इटा मन का लीव्स हला. ओके लीव्स रो जिनसे भी पार्ट्स देखो से जगह हमर काना प्रेजेंट थिबा सेल्स माने प्रेजेंट थिबा. तो प्लांट रो लीफ ता गोटे लिविंग पार्ट्स है. तो जिनसे भी पार्ट्स देखो लीव्स रो सब जगह हमर काना प्रेजेंट थिबा सेल्स माने प्रेजेंट थिबा. सेति लगी सेल के कहला दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. से प्लांट हो एनिमल हो कैन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो. ओके सब केस रे देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ सेल इन इट्स टोटल बॉडी. तार बॉडी रे सब आरे काना प्रेजेंट थिबा सेल रो प्रेजेंस थिबा. सेति लगी सेल के क्वेश्चन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके अच्छा चलो तो देखो डिस्कवरी को डिस्कवर सेल फॉर द फर्स्ट टाइम समस्त जानि छु जे सेल रो डिस्कवर के करथिले रॉबर्ट हुक. बहुत दिनों तुम एटा पढ़ी आसु छ जे सेल दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. सेल वाज
discovered by Robert Hooke. ओके रॉबर्ट हुक बोली गोटे साइंटिस्ट जे के डिस्कवर करथिले सेल के इन 1665 रे ओके बट रॉबर्ट हुक जेन सेल डिस्कवर करथिले सेटा केन सेल डिस्कवर करथिले दैट इज योर नॉन लिविंग सेल और दैट सेल डिस्कवर करथिले he discover dead cell okay dead cell केनो डिस्कवर करथे दैट इज फ्रॉम द कॉर्क सेल हमर जेन गछर छाली अछि और कॉर्क अछि से कॉर्क सेल रो डिस्कवर करथिले फ्रॉम कॉर्क सेल फ्रॉम कॉर्क सेल रो से डिस्कवर करथिले करा सेल रो डिस्कवर करथिले बट डेड सेल से डिस्कवर करथिले ओके देखो एक्चुअली काना हेतिला से जते बोले कॉर्क के नेले कॉर्क के नहीं करे जेते बोले तकर ओन डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप अंडर देखले सता के ओन डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप सेताके नहीं करी गोटे ताकर निजे डिजाइन करथिले माइक्रोस्कोप सेतार अंडर रे जेते बोले सेताके देखले देखो से गोटे निजे माइक्रोस्कोप डिजाइन करथिले बनैथिले एंड सेम माइक्रोस्कोप अंडर रे जेते बेले देखले जे ही फाउंड सम चेंबर्स लाइक स्ट्रक्चर और हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर सेनो माइक्रोस्कोप अंडर रे ताकू काना दिसला हनीकॉम भलिया स्ट्रक्चर्स माने दिसला हनीकॉम माने का हनीकॉम माने हला मोहुगुडा ओके सो हमर ताकर माइक्रोस्कोप अंडर रे काना देखले हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर देखले honeycomb like structure and each chamber in structure man देखले these are just the chambers ई भितरे से खाली काना देखले ना chambers माने देखले chamber माने काना खाली जगह जेंटा अच्छे संदा देखले खाली जगह देखले खाली spaces माने प्रेजेंट थिला एंड इतना के ना दिया गला काम बलिकरी chamber मन को ना दिया गला सेलुली बलिकरी ना दे के रॉबर्ट हुक बट सेलुली वर्ड के यहां दे कहा जाउ दिस इज नाउ कॉल्ड एच सेल यहां दे किता के क्वेश्चन काम लिखरे सेल बलिकरी कहा जाय ओके सेल रो माने कना सेल एक्चुअली सेल रो माने हला कोठरी मन को कहा जाय सेल बलिकरी कहा जाय रॉबर्ट हुक जे तबले डिस्कवर करले खाली से भितर चेंबर्स माने देखबार के पहले ओके जेतु से डेड सेल डिस्कवर करथिले डेड सेल रे हमर काना नै थे प्रोटोप्लाज्म नै थे लिक्विड सब्सटेंसेस किछ नै थे खाली जगह माने प्रेजेंट थिला you know discover हमर डेड सेल जेंटा के डिस्कवर करले के रॉबर्ट हुक बट हमर लिविंग सेल के डिस्कवर करले who discovered the living cell for the first time okay living cell रो जदि हम डिस्कवरी देखमा living cell was discovered by another scientist that is Anton von Leeuwenhoek okay living cell that was discovered by A.V. Leeuwenhoek. Okay, Anton von Leeuwenhoek he discovered the living cell for the first time. Question ऐसी कि डेड सेल डिस्कवर करथिले रॉबर्ट हुक बट कि लिविंग सेल डिस्कवर करथिले दैट इज योर एंटन von Leeuwenhoek. Okay, तो देखला हमर कहना दैट इज द डिस्कवरी अबाउट द सेल. नेक्स्ट हमको डिस्कस करवार আছে कार बाबत रे अनदर कांसेप्ट दैट इज योर सेल थ्योरी हमको डिस्कस करवार छे कहर बाबत रे सेल थ्योरी बाबत ओके सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सेल थ्योरी देखो सेल थ्योरी हमें जेतले देखो छु सेल थ्योरी कहा के कहू छु देखो रिगार्डिंग द सेल गोटे थ्योरी प्रपोज करा गला सेल बाबत रे नै करे गोटे थ्योरी प्रपोज करा गला सेटा के कहै सेल थ्योरी ओके ए थ्योरी was given regarding the cells cells मानकर बाबत रे गोटे थ्योरी प्रपोज करा ताके कहू सेल थ्योरी दुईटा साइंटिस्ट प्रपोज करथिले केन दुईटा साइंटिस्ट वन इज द स्लाइडन एंड अनदर वन दैट इज स्वान ओके सेल थ्योरी proposed by two biologists दुईटा बायोलॉजिस्ट जेन माने के सेल थ्योरी प्रपोज करथिले के स्लाइडन एंड स्वान
one is Leiden and another one that is Swan. Okay, next page रे लिखो गोटे हेले हमर Leiden and another scientist जकर ना हला हमर Swan. Leiden गोटे होचन हमर कान Leiden थिले गोटे botanist and Swan थिले जने zoologist. तो Leiden काना कहले in 1938 रे 1938 रे कहले जे all the plants are made up of cell. According to Leiden, all the plants are made up of cell. Made up of cells. Okay. Leiden जने botanist काना कहले botanist अनबले plants मानकर बाबद रे कहितबे कहले जे सब plants माने कहार द्वारा बनिचन cell द्वारा बनिचन all the plants are made up of cell. पर स्वान कहले स्वान गोटे जूलॉजिस्ट 1939 रे से प्रपोज कले जे all the animals are made up of cells. All the animals are made up of cells. सब animals माने कहार द्वारा बनिचन सेल द्वारा बनिचन Leiden एंड स्वान रो दुईटा कांसेप्ट के मिसे दिया गला दुई जन का कांसेप्ट के मिसे देकरी कहा गला प्लांट्स और एनिमल्स जेतु दुईटा असली सनु मिसे देकरी कहा गला प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेल एनिमल्स इज मेड अप ऑफ सेल तो सनु कहले तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स इनो असला हमर कंक्लूजन जे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स are made up of cells. এটা গলা আমার ফার্স্ট পয়েন্ট অফ द সেল থিওরি তারপরে কানা কহলা দেখো সেল থিওরির সেকেন্ড পয়েন্ট কহলা যে যেন সেলস মানে দ্বারা বনিছে আমার গোটে পার্টিকুলার অর্গানিজম all the cells are chemically similar and they have same metabolic activities. Okay, काना कहला chemically all the cells are similar. All the cells are similar. सब सेल माने similar on chemically and metabolically and similar in metabolic activities. Metabolic activities. समान मेटाबॉलिक एक्टिविटी समान कनो देखबार के मिलबा समान फंक्शन करूथबे ई कांसेप्ट देले के दैट इज कम अंडर द सेल थ्योरी गिवन बाय Leiden एंड Swan. ओके देखो केमिकल सब सेल समान माने का हमर सेल मन को देखमा काना काना केमिकल्स प्रेजेंट छै सेल रे देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ द केमिकल्स लाइक वाटर प्रेजेंट थिबा सेल रे प्रेजेंट थिबा अनदर केमिकल कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट थिबा carbohydrates. Okay, then cell represent thiba protein present thiba cell represent thiba lipid present thiba so carbohydrate lipid protein okay water ita mane hochna amar kana these are the biomolecules or these are the chemical substances ये सब chemicals मान को नै करी बनिछे हमर सेल सब सेल रे carbohydrate protein lipid इटा सब present थिबा okay इटा देले हमर कांसेप्ट सेल थ्योरी रो कांसेप्ट आसल तापर देखो 3 नंबर पॉइंट काना कहूचे सेल थ्योरी जब और एवरी सेल हैव ए सम अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विथ ए डेफिनाइट न्यूक्लियस दैट इज बाउंडेड बाय ए सेल मेम्ब्रेन विथ और विदाउट सेल वॉल काना कहला देखो आ गोटे पॉइंट आसला सेल थ्योरी रे आ गोटे पॉइंट ऐड कर दमा एबे काना कहला जे all the cells have some amount of protoplasm okay with a nucleus protoplasm रे amar kana थिबा गुटे nucleus present थिबा that is bounded by okay it is सब that is bounded by cell membrane or plasma membrane cell membrane with or without cell wall with or without cell wall काना कहला देखो
गोटे सेल रे हमर काना प्रेजेंट थिबा सपोज इटा गोटे सेल हला सेल रे गोटे न्यूक्लियस प्रेजेंट थिबा एंड न्यूक्लियस ता हमर केनो प्रेजेंट थिबा साइटोप्लाज्म रे प्रेजेंट थिबा एंड टोटल टा के हमें कहला काम बोली के दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म इधर के कहला हमें काम बोली के प्रोटोप्लाज्म cytoplasm with nucleus ताके कहते protoplasm. Okay, every cell have protoplasm with its nucleus तार भीतर nucleus है and that is bounded by a cell membrane. इटा के कहूँ हमें काम बोली करी तार cell membrane बोली करी कहूँ इटा हला हमर cell membrane and cell रो membrane रो बाहर साइड रे काना थाई पारे cell wall थाई भी पारे नाई भी थे पारे cell wall केनो थीबा plant cell केस रे cell wall नाई थीबा केनो in case of animal cell. Okay, सेनो कहला जे लास्ट के देखो कहला जे that is bounded by cell membrane protoplasm रो बाहर साइड रे काना अछि cell membrane अछि cell membrane रो बाहर साइड रे थाई पारे with or without cell wall थाई भी पारे cell wall नाई भी थाई पारे cell wall हमर केनो थिबा cell wall will be present in plant cell रे हमर cell wall present थिबा animal cell रे जे देखमा cell wall ता that is absent in animal cell. Okay, एटा गला हमर काना another point तापर देखो cell theory रे आ गोटे point हमें ऐड करमा जे हमर काना कहूचे गोटे particular organism रो activity that is the activities of the sum total cells present in that organism. गोटे organism रे जत्ती भी सेल अछन सब सेल रो एक्टिविटीज के जदि मिसै दमा सेटा कहार एक्टिविटीज हबा से होल ऑर्गेनिज्म रो एक्टिविटीज हबा ओके काना कहला द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गुड ऑर्गेनिज्म रो एक्टिविटी ओके इज द sum total activities of the cells present in it जत्की भी सेल प्रेजेंट थिबे इथिरे से लिविंग ऑर्गेनिज्म रे जत्की भी सेल थिबे सबु सेल रो यदि फंक्शन के मिसै दमा सबु सेल रो एक्टिविटी के यदि मिसै दमा कहार एक्टिविटी के रिप्रेजेंट करबा होल ऑर्गेनिज्म रो एक्टिविटी के रिप्रेजेंट करबा सपोज फॉर एग्जांपल मोर बॉडी नला मोर बॉडी रे सबु जगह रे सेल्स माने प्रेजेंट अछि जेहि में देखो हमर सबु जगह रे काना प्रेजेंट अछि सेल्स प्रेजेंट अछि हमर बॉडी रे सबु सेल्स मनकर काम के मिसे जदि दमा बेले कहार फंक्शन हबा हमर फंक्शन हबा होल लिविंग ऑर्गेनिज्म हमर ह्यूमन रो फंक्शन कहार ऊपर डिपेंड करछे हमर बॉडी रे जत्ती भी सेल्स प्रेजेंट अछि जाहि भी सेल्स प्रेजेंट अछि से सेल्स मनकर फंक्शन जदि मिसे दला तो टोटल फंक्शन हबा हमर इटा कहला हमर सेल थ्योरी रो पॉइंट ओके इटा कहला हमर का फर्स्ट कांसेप्ट अबाउट द सेल थ्योरी बट सेल थ्योरी रो काना बाहरला एक्सेप्शन बाहरला ओके so cell theory रो एक्सेप्शन काना बाहरला लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्सेप्शन सेल थ्योरी रो एक्सेप्शन हला जे स्लाइडन एंड स्वान दे unable to describe how new cells get form or how new cells are originated नोआ सेल रो केंदा करी फॉर्मेशन है सी नोआ सेल रो केंदा करी ओरिजिनेशन है सी दैट वाज नॉट डिस्क्राइब्ड बाय स्लाइडन एंड स्वान इन देयर थ्योरी सेल थ्योरी ओके काला काला एक्सेप्शन जे नोआ सेल केंता करी बनसी इतर बाबत रे माने आईडिया नाही देई थी के स्लाइडन एंड स्वान they unable to describe how new cells are origination माने काना फॉर्मेशन हवाटा बनबाटा नवा सेल केंता करी फॉर्मेशन है सी that was not described by cell theory described by Sladen and Swan in their cell theory okay so that is cell theory के modify करवार लगी आउटे साइंटिस्ट असले so that we have to discuss about the modification of the cell theory next लामोर modification करवार लगी आउटे साइंटिस्ट असले modification of cell theory okay cell theory के modify करा गला and cell theory के modify किए कले another biologist तक नाहला रुडोल्फ वर्सो
that was by Rudolf Virchow. Okay, cell theory that was modified by another scientist, that is Rudolf Virchow. Rudolf Virchow गोटे सेंटेंस कहले ताकर लैंग्वेज रे काना सटा omnicellular e-cellular ताकर लैंग्वेज रे कहले omnicellular e-cellular. ओके, omnicellular e-cellular माने कना देखो हम इतके इंग्लिश रे ट्रांसलेशन करमा. omnicellular माने कना that is the formation of new cell. omnicellular माने कना formation of new cell, formation of new cells. ओके, e-cellular माने कना, e माने existing. ओके, e-cellular माने हला existing cell, existing cells. ओके, काना कहला देखो यहाँ देते के बुझमा कुटे सेंटेंस रे ट्रांसलेट करमा इंग्लिश में के omnicellular e-cellular माने हला new cells or the formation of new cell that is from the pre-existing cell. आगुरु जेन सेल थिबा से सेल रो नवा सेल रो फॉर्मेशन हबा. ये कांसेप्ट के प्रपोज कले रुडोल्फ वार्चो. ओके, तो इते काना कहले अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ वार्चो न्यू सेल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री-एक्जिस्टिंग सेल. ओके, कहार कांसेप्ट हिसाब है अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ वार्चो. According to Rudolf Virchow, new cells get originated from the pre-existing cells. New cells are originated from pre-existing cell. Pre-existing cells. Pre-existing cell माने कना जेन सेल माने आगरु अछन. Suppose this is one cell अच्छे. ई सेल रो जेतबेले डिवीजन हबा इनु काना बनबा नवा सेल बनबा. ई सेल रो फिर काना बनबा जेतबेले सेल डिवीजन हबा इनु फिर काना बनबा न्यू सेल माने फॉर्मेशन हबा. ओके, इटा मन कर यहां दे हमर न्यू सेल हला. ओके, ई न्यू सेल ता बनला केनो ई सेल रो बनला. ई सेल ता बनिथिला केनो आगरु जेन सेल थिला सेनो बनिथिला. इटा कोचे दैट इज द omnicellular e-cellular. Omnicellular e-cellular माने कना formation of new cell from the pre-existing cell. This concept was given by Rudolf Virchow through entrance level question माने ऐसे. Okay, इटा कला हमर Rudolf Virchow रो modification of the cell theory question ऐसे who modified the cell theory. But after this modification, there is still some demerits in the cell theory. Modification करले Rudolf Virchow, but तार परे भी हमर किछटा demerits रही गला cell theory रो. Demerits of cell theory. देखो cell theory कहतला जे all the living organisms are made up of cell, right? कहतला all the living organisms are made up of cell. But if you see one of the living organism, but still there is some confusion regarding the virus. Sometimes virus shows the living characteristic features and sometimes virus shows non-living characteristic features. गोटे भाइरस टा के लिविंग बोली कि केते बेले कहसु जते बेले भाइरस टा दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द होस्ट बॉडी. सपोज फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस के हमें लिविंग बोली कि केते बेले कहमा व्हेन द कोरोना वायरस इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड इनसाइड आवर बॉडी इट इज मल्टीप्लाइंग. आवर बॉडी भीतर काना करछे मल्टीप्लाई करछे तार नंबर इंक्रीज करूछ. ओके, किए नंबर इंक्रीज करी परसी कोन लिविंग ऑर्गेनिज्म ना नॉन लिविंग थिंग्स इ तार नंबर इंक्रीज करी परबा कहिता. दिस इज पेन इधर के थ्री दमा. ओके, कि मोर बॉडी भीतर के एंटर कर दमा कि मल्टीप्लाई करबा के ना करी पारे. सो दैट दिस इज दिस इज योर नॉन लिविंग थिंग्स. बट इफ यू सी द वायरस, व्हेन द वायरस एंटर इनसाइड आवर बॉडी द वायरस कैन मल्टीप्लाई. द नंबर ऑफ वायरस विल इंक्रीज इनसाइड आवर बॉडी. दैट मींस आवर बॉडी भीतर वायरस काना हे गला लिविंग हे गला. सो दैट वायरस इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट स्टिल virus is not made up of cell. But cell theory कहला all living organisms are made up of cell, but viruses are living organisms inside the host body, but still they are not made up of cell. So cell theory, demerit asla. Pala demerits viruses. Okay, and microbiology पढ़ला time में और भी तो term भी हमें पढ़ी थी ना, viroids and prions. Viroids, another one that is the prions. Okay, viroids कहा के कोई सुन आरएनए इन्फेक्टिंग आरएनए जिन आरएनए टा इन्फेक्शन करसे ताके वायरस बोली कि कहसी
प्रियन कहा के कहसी इन्फेक्शन करूथबार प्रोटीन के कहसी प्रियंस ओके के इन्फेक्शन करसी जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म गोटे ही इन्फेक्शन करसी but our viroid cell that is only made up of RNA prion cell that is only made up of protein virus that is made up of what nucleic acid and protein but virus viroids prions these are not made up of cell still they have some living characteristic features virus is a living organism inside the host body okay so virus viroids prions these are not made up of cells not made up of cells इमाने सेल द्वारा नहीं बनी ओके तो वन ऑफ द डिमेरिट्स असला सेल थ्योरी रो जो भाइरस हला कि भाइरस हला प्रियन हला दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल तापरे कहूतला सेल थ्योरी रे गुटे पॉइंट जे एवरी सेल हैव सम अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म दे हैव ए न्यूक्लियस राइट बट इफ यू सी in case of your bacteria in case of your cyanobacteria in case of your blue green algae there is absence of definite nucleus okay amor bacteria hala bacteria pakke there is absence of nucleus bacteria hala ya fir blue green algae okay bacteria hala blue green algae hala they don't possess nucleus they do not have nucleus they do not have nucleus okay इमानकर पाखे न्यूक्लियस प्रेजेंट नाइ नो हमें माइक्रोबायोलॉजी ऑलरेडी कंप्लीट करि सारी सो जन माने माइक्रोबायोलॉजी स्टिल कंप्लीट नाइ करबार तले स्टिल इफ यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लास देन यू हैव टू सी आवर प्लेलिस्ट अवेलेबल अछि ओके सन हमर बैक्टीरिया बाबद डिटेल्स डिस्कस करि छु जदि हम जिमा बैक्टीरिया भीतर के बैक्टीरिया रो भीतर ओनली काना प्रेजेंट थिबा नेकेड डीएनए प्रेजेंट थिबा डीएनए टेंडा प्रेजेंट थिबा खाली ओके ब्लू ग्रीन algae भी देखमा सेम हमर साइटोप्लाज्म रे खाली डीएनए प्रेजेंट थिबा न्यूक्लियस बलबा स्ट्रक्चर किछि प्रेजेंट नै था हमर समान कर केस रे पर सेल थ्योरी रे कहला जे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे हैव सम प्रोटोप्लाज्म एंड हैव ए न्यूक्लियस बट बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन algae दे डू नॉट possess nucleus this is another demerits of the cell theory okay दुईटा सेल थ्योरी रो हमर डिमेरिट्स गला आमुटे हम देखमा RBC हला एंड आउट हमर ऐसी सिप ट्यूब सेल RBC रेड ब्लड सेल सिप ट्यूब सेल ओके RBC सिप ट्यूब सेल ओके इमान को जदि देखमा दे आर आल्सो नॉट हैविंग न्यूक्लियस एज वेल एज अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स RBC जतले मैच्योर है यासी सिप ट्यूब सेल जतले मैच्योर है यासी मैच्योर कंडीशन रे दे डू नॉट possess nucleus in maturity they do not have a nucleus okay and other cell organelle भी मानकर केस रे एब्सेंट रहे तमर सेल थ्योरी के इमाने काना कले they do not obey the cell theory सतिर लगी जगह में कंसीडर करमा as a demerits of the cell theory okay इटा गला हमर कहार बाबद रे सेल थ्योरी बाबद रे गला नेक्स्ट हमें डिस्कस करमा टाइप्स ऑफ सेल बाबद रे डिस्कस करमा okay so let's discuss about the types of the cells types of cell के हमें दुईटा कैटेगरी रे ब्रॉडली डिवाइड कर काना काना one is the prokaryotic cell and another one that is the eukaryotic cell कहा के बेस करी generally that is on the basis of the presence or absence of a definite nucleus तो definite or true nucleus present अच्छे कि नहीं नो सता के बेस करी सेल के हमें दुईटा कैटेगरी रे डिवाइड करसु one is the prokaryotic cell and another one eukaryotic cell differentiate करतल जिमा डिस्कस करतल जिमा में okay so काना कहला on the basis of presence or absence of a definite nucleus you can divide the cell into two categories one is the prokaryotic cell and another one that is the eukaryotic cell okay prokaryotic देखो word देखो pro माने काना primitive pro रो माने हला primitive okay actually pro
माने हला प्रिमिटिव इस जगह रे बट हादे जति जिमा हादे मॉडर्न जमाना रे प्रो लागे गला मींस दैट इज मोस्ट एडवांस बट हियर फॉर दिस प्रोकैरियोटिक सेल दिस इज प्रो मींस प्रिमिटिव and karyotic word कैंसर लेके असला that is from the word carrion carrion माने कना carrion माने हला न्यूक्लियस ओके तो देखो प्रिमिटिव न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल जिन सेल पाखे प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट थिबा ओके और प्रिमिटिव कही पारमा और फॉल्स बोली करी कही पारमा जेन सेल पाखे गोटे फॉल्स न्यूक्लियस और प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट थिबा ताके कहमा में प्रोकैरियोटिक सेल बोली करी कहमा व्हेरेज यू रो माने हला ट्रू यूरो माने हला ट्रू और एडवांस ओके व्हेरेज कैरियन माने हला न्यूक्लियस ओके सो हम और प्रोकैरियोटिक सेल गोटे साइड रे लखमा यूकैरियोटिक सेल गोटे साइड रे मैं डिस्कस करमा सो प्रोकैरियोटिक सेल कहा के कहूचू ए सेल विथ ए प्रिमिटिव और false nucleus that is called as prokaryotic cell but eukaryotic cell में कहा के कहमा a cell with a true nucleus or advanced nucleus a cell with a true or advanced nucleus or advanced nucleus that is called as what that is your eukaryotic cell advanced nucleus काना तापर जमा में false nucleus नहीं के primitive nucleus नहीं advanced nucleus कहा के कहमा देखो हमें जते बोले न्यूक्लियस देखुछु जदी हमें न्यूक्लियस रो काना थिबा गोटे आउटर कवरिंग थिबा ओके सपोज दिस इज फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस रो कवरिंग थिबा न्यूक्लियस रो कवरिंग के कहसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भितरे हमर काना प्रेजेंट से गोटे सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस प्रेजेंट से इतर भितरे गोटे सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस से जहा के कहै छै न्यूक्लियोप्लाज्म ओके तार परे हमर भितरे प्रेजेंट से न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट दिस वन दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म ओके न्यूक्लियोप्लाज्म रो भीतर के जदी जिमा इन हमर काना प्रेजेंट से गोटे नेटवर्क प्रेजेंट से जहा के को ऐसे क्रोमाटिन नेटवर्क बोली करी कहा जैसी हियर देयर इज प्रेजेंस ऑफ ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जहा के को ऐसे क्रोमाटिन नेटवर्क बोली करी कहा जैसी ओके दिस वन दैट इज द क्रोमाटिन नेटवर्क और क्रोमाटिन मटेरियल ओके केतरा जिनिस गला तीनटा जिनिस गला आ गुटे असला 4 नंबर जिनिस काना दैट इज योर न्यूक्लियोलस आ गुटे स्ट्रक्चर से जहा के वजह से न्यूक्लियोलस ओके जेन सेल पाखे न्यूक्लियस थिबा एंड इदा मन कर से सेल हला ई सेल पाखे काना আছে न्यूक्लियस আছে न्यूक्लियस रा काना काना আছে न्यूक्लियर मेम्ब्रेन আছে न्यूक्लियोप्लाज्म अच्छे तार भीतर गोटे सेमी फ्लूइड रीजन प्रेजेंट अच्छे क्रोमाटिन मटेरियल अच्छे एंड न्यूक्लियोलस अच्छे चारटा जिनिस जदी अच्छे बेले सता के कहमा में काम बोली कि दैट इज कॉल्ड योर यूकैरियोटिक सेल और दैट इज कॉल्ड योर एडवांस न्यूक्लियस जनते थिबा ताके कहमा यूकैरियोटिक सेल और प्रिमिटिव न्यूक्लियस अच्छा तारा गुरु बे गोटे जिनिस कहू छै इजन क्रोमाटिन मटेरियल कहू छु ई क्रोमाटिन मटेरियल कहा के नेकर बनी छै This chromatin material that is made up of your DNA and one of the protein, kana protein, histone protein. Okay, कहाँ के निकल बनी छे? DNA and another one that is the protein, तनाला histone protein. DNA और histone protein के मिसे करी कहा जैसे कामल करी chromatin material बली करी कहा जैसे suppose this is DNA हला DNA टा coil दिस is around the protein. Okay, DNA that is coiled around the protein ताकि कोई सो हमें क्रोमाटिन मटेरियल बोली करी कहसो बट हमें प्रोकैरियोटिक सेल जदी देखमा दिस वन दैट इज द गुटे बैक्टीरिया रो जदी सेल देखमा सेना हमर काना प्रेजेंट थिबा ओनली डीएनए प्रेजेंट थिबा आ किछि नै था ना क्रोमाटिन मटेरियल होचे के नहीं नो ओके ना न्यूक्लियोप्लाज्म होचे के नहीं नो ना न्यूक्लियोलस होचे नहीं नो ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होचे कैन से जिनिस नहीं नो
तो इतके कहमा में काम बोली करी इन हमर खाली न्यूक्लियस जागर रे न्यूक्लियस रे जनता हमर डीएनए से खाली डीएनए प्रेजेंट अछि डीएनए छडाओ कैंसी जिनिस नै न जेतो हमर न्यूक्लियस देखुछु एटा हमर न्यूक्लियस हला न्यूक्लियस रो मेन पार्ट के कवर करी छै क्रोमैटिन मटेरियल एंड क्रोमैटिन मटेरियल रो मेन पार्ट ता होछ हमर काना दैट इज द डीएनए दैट मींस न्यूक्लियस रो मेन कॉन्स्टिट्यूशन जे देखमा मेनली न्यूक्लियस दैट इज कवर्ड विथ डीएनए ओके जेहेतु डीएनए इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इन हमर डीएनए ता डायरेक्टली प्रेजेंट अछि साइटोप्लाज्म रे तो हमर ई डीएनए रीजन जेन जगह रे अछि सेटा के कहै नॉट न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड एटा के कहै न्यूक्लियोइड बोली के कहै न्यूक्लियस भलिया गुटे रीजन अछि बट नॉट द न्यूक्लियस न्यूक्लियस रे जनता डीएनए प्रेजेंट सी हेंता गुटे जगह रे हमर सेल मानकर ओके केन सेल रे प्रोकैरियोटिक सेल रो गोटे जगह रे डीएनए प्रेजेंट अछि से रीजन के कहउछो हम काम बोली के न्यूक्लियोइड रीजन बोली के कहउछो दैट इज नॉट द ट्रू न्यूक्लियस बिकॉज़ इन अ ट्रू न्यूक्लियस देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ व्हाट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन nucleoplasm nucleolus and chromatin material this is the basic difference between the prokaryotic cell and the eukaryotic cell basic difference gala ito अब कना डिफरेंस अच्छे वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन जल्दी जल्दी हमें कंप्लीट करमा लेट्स डिस्कस हियर ओके हमें स्टार्ट करो फ्रॉम द सेल वॉल ओके सेल वॉल रो पहला स्टार्ट करो प्रोकैरियोटिक सेल मानकर जदी सेल वॉल देखमा जनरली प्रोकैरियोटिक सेल रो सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट पेप्टाइडोग्लाइकन ओके प्रोकैरियोटिक सेल रो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट पेप्टाइडोग्लाइकन okay the prokaryotic cell wall this is made up of कहार द्वारा बनी थी पेप्टाइडोग्लाइकन द्वारा पेप्टाइडोग्लाइकन देखो वर्ड देखो पेप्टाइडो माने हला पेप्टाइड ओके पेप्टाइड कहा के कहसी हमर एमिनो एसिड मानकर भीतर बॉन्ड फॉर्मेशन है जहां के कहसे पेप्टाइड बॉन्ड बोली के वजह से बायोमोलिक्यूल्स टाइम रे में डिस्कस करमा एमिनो एसिड भीतर काना बनसी पेप्टाइड बॉन्ड सेनु असला पेप्टाइड एंड एमिनो एसिड भीतर पेप्टाइड बॉन्ड बनले काना बनसी प्रोटीन तो पेप्टाइड कहार लागि हम यूज करू छु प्रोटीन लागि देन ग्लाइकन व्हाट यूज करू छु कहार लागि कार्बोहाइड्रेट लागि सम और prokaryotic cell ro cell wall that is mainly made up of peptidoglycan is a proteinaceous as well as carbohydrate containing substance protein भी अच्छे carbohydrate भी अच्छे दुई अंकर गुडे कंपोजिशन जहा के कोइ समय पेप्टाइडोग्लाइकन एंड पेप्टाइडोग्लाइकन बाबद रे डिटेल्स हमें डिस्कस करी सारी जो माइक्रोबायोलॉजी पर्सन रे जते बेले बैक्टीरिया रो सेल वॉल बाबद रे डिस्कस करतुला सना पेप्टाइडोग्लाइकन बाबद रे डिस्कस करतुला देन पेप्टाइडोग्लाइकन रिलेटेड हमें आउ भी किछि टॉपिक डिस्कस करछु जनता के हला हमर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बाबद रे भी डिस्कस करछु जेन माने not yet attend this class of the microbiology you can attend our class सब बोले में कहू छे रिपीटेडली कहू छे माइक्रोबायोलॉजी कांसेप्ट ऑलरेडी हमर कंप्लीट है सारी छे you can see our playlist and our playlist रे अवेलेबल अछि ओके नेक्स्ट देखो हमर सेल वॉल इन केस ऑफ योर यूकैरियोटिक सेल रो सेल वॉल केन जगह रे देखबार के मिलसी दैट इज इन केस ऑफ योर प्लांट सेल रो सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट सेलुलोज mainly okay plant cell ro cell wall that is mainly made up of what cellulose okay but how भी किछि substances अछि जेन कि हमें जल्दी रिवील करमा जेतबले सेल वॉल बाबद रे डिस्कस करमा जस्ट हमको जे क्वेश्चन आसे plant cell wall is made up of what then we have to write cellulose right तापर देखो हाउ केना देखबार के मिलसी इन केस ऑफ योर फंगल सेल रो सेल वॉल that is mainly made up of what that is your chitin सेलुलोज हला काइटिन हला इटा माने गुटे गुटे काना these are the polysaccharides सेलुलोज हला काइटिन हला इटा माने काना these are the polysaccharides right it is cell wall the difference okay but cell wall that is absent in case of your animal cell case रे काना नहीं था cell wall present नहीं था anyway तापरे आउ काना difference साउस से तापर हमें यदि सेल मेम्ब्रेन के पॉलिजिमा सेल मेम्ब्रेन रो किछि डिफरेंस नाही न हमर सेल मेम्ब्रेन दुही जनकर सेल मेम्ब्रेन जे देखमा दुही केस रे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट से प्रोकैरियोटिक सेल रे भी आउ
eukaryotic cell रे भी both have the cell membrane and cell membrane रे mainly काना present is protein and lipids mainly but how भी substances present is protein and lipid present is here also protein and lipid present is but difference केन आसबा देखो सेल मेम्ब्रेन के यदि हमें कंसीडर करू छो डिफरेंस प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक भितरे केनो आसे जे यूकैरियोटिक सेल हैव डबल मेम्ब्रेन सिस्टम हमर यूकैरियोटिक सेल केस रे काना प्रेजेंट अछि डबल मेम्ब्रेन सिस्टम माने काना तो दुईटा टाइप रो मेम्ब्रेन अछि दुईटा मेम्ब्रेन अछि होल सेल रे दुईटा जागा रे मेम्ब्रेन अछि that's why that is called as double membrane system केन जागर अछि डिस्कस कर म तारा घरु मी जागर डिफरेंशिएशन जेतु करूछन जाय साइड रे तार लिखि देली जे हमर प्रोकैरियोटिक सेल केस रे देयर इज प्रेजेंस ऑफ यूनि मेम्ब्रेन सिस्टम गुटे न मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट अछि यूनि मेम्ब्रेन सिस्टम that is in case of your prokaryotic cell but in case of your eukaryotic cell क्या membrane system अछि double membrane system why this is called as double membrane system let's see here जदि हमें गुटे eukaryotic cell देखमा suppose this is one eukaryotic cell गुटे हमें cell देखला here this one that is the nucleus okay देख इटा हमर हला cytoplasm ओके साइटोप्लाज्म रो बाहर साइड रे काना আছে मेम्ब्रेन ओके outside the cytoplasm काना प्रेजेंट আছে मेम्ब्रेन प्रेजेंट আছে कि नाही न गोटे कवरिंग আছে कि नाही न ओके सेल मेम्ब्रेन बोली करी कहूछु ताके so this one that is the cell membrane that is present outside the cytoplasm ओके तब देखो साइटोप्लाज्म भीतर के जाओ माने इनसाइड द साइटोप्लाज्म रे काना আছে न्यूक्लियस रे काना আছে न्यूक्लियर मेम्ब्रेन আছে कि ना नहीं ओके तापर हम जिमा तार भीतर काना थिबा देखो माइटोकॉन्ड्रिया दिस इज सपोज माइटोकॉन्ड्रिया हला माइटोकॉन्ड्रिया रे भी मेम्ब्रेन আছে ओके इटा के कहला हमें माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल परे हमें जे देखमा न्यूक्लियस रे अराउंड रे देयर इज प्रेजेंस ऑफ योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड हमर नेटवर्क भलिया स्ट्रक्चर्स माने प्रेजेंट से देखिथिबो आगरु 12 ले भी पढिथिबो प्लस 2 रे भी पढिथिबो ओके किछटा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट से जाके कहैसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे भी काना थिसी गुटे एक्स्ट्रा तर मेम्ब्रेन थिसी ओके सेल रो भितरे गोल्गी बॉडी प्रेजेंट थिसी गोल्गी बॉडी जे भी मेम्ब्रेन रहसी ओके लाइसोसोम ना सुनिथिबो लाइसोसोम रो भी तार निजर मेम्ब्रेन अछि लाइसोसोम माने प्रेजेंट अछि तार निजर मेम्ब्रेन अछि राइट तब साइटोप्लाज्म भितरे इनसाइड द साइटोप्लाज्म भितरे किछटा स्ट्रक्चर अछन जहा के कहैसी सेल ऑर्गेनेल जेंदा के न्यूक्लियस हला माइटोकॉन्ड्रिया हला गोल्गी बॉडी हला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हला लाइसोसोम हला कि जे नाम माने धरली मान को काना कहा जैसी सेल ऑर्गेनेल ये सेल ऑर्गेनेल मानकर पे काना होचे गोटे मेम्ब्रेन अछि बाहर साइड रे तो गोटे मेम्ब्रेन रहला एक नंबर ई मानकर फिर मेम्ब्रेन अछि दिस इज सेकंड मेम्ब्रेन समस्तंगर फिर गोटे सेपरेट मेम्ब्रेन अछि इनसाइड द साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन प्रेजेंट आउटसाइड the cell organelles मानकर बाहर साइड रे भी मेम्ब्रेन अछि तो केतेटा मेम्ब्रेन सिस्टम रहला दुईटा एक नंबर आउटसाइड द साइटोप्लाज्म दुई नंबर इनसाइड द साइटोप्लाज्म अराउंड द सेल ऑर्गेनेल्स केन सेल ऑर्गेनेल रे रहसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हला न्यूक्लियस हला माइटोकॉन्ड्रिया हला ओके देन हमर गोल्गी बॉडीज हला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हला योर लाइसोसोम हला समस्त गुड सेपरेट मेम्ब्रेन अछि तो सेति लगे जे कहू हम क्या मेम्ब्रेन सिस्टम double membrane system but if you see the bacteria suppose this one that is the bacteria okay bacteria that is very simple organism but this is most critical right
This is having very simple organization. That means here cytoplasm ro bahar side re khali membrane ache ei tar bhitre au anta kichi cell organelle nai no jeno ki cell membrane thiba. Okay, only one cell membrane that is present outside the cytoplasm. Au neno na endoplasmic reticulum thisi na mitochondria thisi na lysosome thiba na au Golgi bodies thiba na au kichi structures present. बुझी पारल तो हमर प्रोकैरियोटिक सेल रे काना नाही नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नाही नो ओके मेम्ब्रेन द्वारा बाउंड हेतिबा मेम्ब्रेन द्वारा कवर हेतिबा सेल ऑर्गेनेल्स दैट इज नॉट फाउंड हियर ओके मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट हियर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट kahar case re prokaryotic cell re membrane bound cell organelle that is present here in case of pure eukaryotic cell case re membrane bound cell organelle present is okay membrane bound cell organelle ino amar kana ache present ache kana membrane bound cell organelle endoplasmic reticulum Golgi bodies mitochondria okay au jodi dekma plant cell case re kana thisi plastid or take one of the plastid janda chloroplast la क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट थिबा ओके लाइसोसोम प्रेजेंट थिबा ओके इमान कर सेपरेट मेम्ब्रेन रहसी सेतले कि मान को हम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल बोली कि कहमा ओके दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ व्हाट दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल दिस इज नॉट सीन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल बुझी पारलो सेल मेम्ब्रेन नै करी हमें डिफरेंशिएट कला बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल तापर जाऊं आओ भीतर के आहुरी डिफरेंस जदि जिमा हमर प्रोकैरियोटिक सेल रे काना प्रेजेंट सी देयर इज प्रेजेंस ऑफ mesosomes this is one of the features of the cell membrane ro out features जेंटा कि हमर only seen in case of prokaryotic cell mesosome कहा के कहा जैसे let's discuss here mesosome होचे हमर काना this is the infoldings of the plasma membrane suppose it a cell ro wall हला cell wall परे परे हमर रहला cell membrane if you see the cell membrane of your bacteria cell membrane काना करते से अंदर भीतर के infolding formation करते सी यानी जन infolding formation करते सी ताके कहा जैसे कामल के that is called as your mesosome okay just wait okay इधर के कहा जैसे कामल के this one that is the mesosome okay so mesosome हमर कहा के कहउछो that is the infoldings of the plasma membranes भीतर साइड के फोल्ड करी छी सतले हम राइटिंग दिस एज infolding of plasma membrane plasma membrane रो infoldings के कहउछो हमें काम लिखरी mesosome लिखरी कहउछो this is the features of the prokaryotic cell this is not seen in case of your eukaryotic cell this is not found what is the site or what is the process that is taking place in this mesosome generally different biologists they thought that mesosome is the site of respiration इधर के believe करा जैसे कांतर साइट बोली करी रेस्पिरेशन रो साइट बोली करी बिलीव करा जैसे ई जगह रे काना है से रेस्पिरेशन प्रोसेस बिलीव करा जैसे because several respiratory enzymes that are found in this mesosome region but हमर रेस्पिरेशन रो लागि हमर यूकैरियोटिक सेल जदी देखमा रेस्पिरेशन ता केन जगह रे से रेस्पिरेशन occurs in respiration term or separate cell organelle আছে কেনটা that is your mitochondria re amar habas respiration process but mitochondria that is absent here in case of your prokaryotic cell and in place of mitochondria there is presence of what mesosome the mitochondria term question I see in case of your prokaryotic cell which part that act as mitochondria or mitochondrial activity that is seen in which part of the prokaryotic cell that is your mesosomes question I see be carefully suni kari jo okay next how can difference out let's discuss next lamor another structure that is the pili or fimbri
पिली माने काना और फेमरी माने काना देखो आमे किसीटा प्रोकैरियोटिक सेल जति देखु छो प्रोकैरियोटिक सेल रो बाहर साइड रे आउटसाइड द सेल देयर इज प्रेजेंस ऑफ सम हेयरी प्रोजेक्शन सेल रो बाहर साइड रे किछटा हेयरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट सी जहा के कहसी पिली बोली कि कहते सीटा माइक्रोबायोलॉजी रे पढी छु बोधे ओके सो सम प्रोटीनासियस कहा द्वारा बनिचन प्रोटीन द्वारा बनिचन सम प्रोटीनासियस हेयरी स्ट्रक्चर्स present outside the cell जहा के कहसु हमें काम बोली कि these are called as pili इधर के कहसी काम बोली कि पिली बोली कि कहसी हेयर बोलिया बाहरी छ okay this is not found in case of your animals in case of your eukaryotic cell रो देखबार के नहीं मिले ना प्लांट सेल एनिमल सेल कैंसी केस रे देखबार के नहीं मिले हमर पिली कांसेप्ट पिली रो काम काना पिली एक्चुअली हेल्प करसी जब सपोज गोटे बैक्टीरियल सेल ना बैक्टीरियल सेल काना करला माने कर सपोज धरिनो इटा सेल हला ई रीजन के मोर सेल बोली कि कंसीडर करो दिस इज अनदर सेल हला इधर भीतर काना बाहरी छ पिली माने बाहरी छ ई पिली मानकर द्वारा जेन जगह रे माने थिबे इटा गोटे सेल जेन जगह रे थिबे से जगह रे माने अटैच हेकि रहि पारबे गोटे आ गोटे सरफेस गोटे पिली द्वारा पिली मानकर द्वारा सेल्स माने काना हेकि रहि पारबे अटैच हेकि रहि पारबे ओके इटा मानकर पिली हला पिली बाहरी छ ओके पिली मानकर द्वारा इमाने काना हिचन गुटे आ गुटे सेल रो सरफेस रे अटैच हेकरी रहि पारुचे सो दैट काना फॉर्मेशन करि पारुचे गुटे कॉलोनी फॉर्मेशन करि पारुचे बहुत सारा बैक्टीरियल सेल गुटे जागा रे गैदरिंग हेकरी अछन गुटे बैक्टीरिया आ गुटे बैक्टीरिया रो सरफेस संगे अटैच हेकरी अछि बाय द हेल्प ऑफ व्हाट दैट इज द पिली ओके एंड हमें गुटे रिप्रोडक्शन प्रोसेस पडितला बैक्टीरिया केस रे जेंते कि कंजुगेशन बाबत कंजुगेशन रो लागि गोटे पिली हेल्प करसी जहा के कोसी सेक्स पिली बोली कि कहा जासी डिस्कस करितिला दैट मींस दैट हेल्प्स इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मेथड ओके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जेंदा कि हमर वन ऑफ दैट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मेथड कंजुगेशन बाबत रे हम डिस्कस करिछु बैक्टीरिया क्लास रे माइक्रोबायोलॉजी ऑलरेडी ओवर ही सारी छे कंजुगेशन रो लागि भी हेल्प कर सिकिए दैट इज द पिली मानकर एटा गोटे बैक्टीरिया अछि ओके दिस इज वन बैक्टीरिया दिस इज अनदर बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया कहार द्वारा एटा कनेक्ट हेबे पिली द्वारा कनेक्ट हेबे सेक्स पिली बोली कि को माता के एंड गोटे बैक्टीरिया रो डीएनए दैट विल ट्रांसफर टू दिस बैक्टीरिया ओके ताके कहसे कंजुगेशन बोली कि कहसी सो कंजुगेशन प्रोसेस रो लागि भी हेल्प करसी कि दैट इज द पिली और द कंजुगेशन ट्यूब और द सेक्स पिली जहा के को पर दिस काइंड ऑफ पिली लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नॉट सीन इन केस ऑफ योर यूकैरियोटिक सेल बुझियला तापर असला मोर अनदर स्ट्रक्चर दैट इज योर फ्लाजेला आउट स्ट्रक्चर असला फ्लाजेला flagella kana this is a locomotory structure flagella hoche amar kana this one that is the locomotory structure माने kana locomotion रो असला locomotion करवार लगी गोटे जगह रो आ गोटे जगह के मूव करवार लगी गोटे स्ट्रक्चर हेल्प करसी जहा की कहसी फ्लाजेला बोली करी तो हमर बैक्टीरियल सेल केस रे और प्रोकैरियोटिक सेल केस रे फ्लाजेला जन प्रेजेंट सी okay this one that is very simple proteinaceous structure this is made up of a protein jaha ke kaise flagellin protein flagella kaha ke nekri bani che this is made up of flagellin protein okay but if you see in case of your eukaryotic cell kichna eukaryotic cell re there is presence of flagella but eukaryotic cell flagella eukaryotic flagella that is made up of which protein this one that is made up of tubulin protein made up of tubulin protein okay जेतेबेला मैं डिस्कस करमा सेंट्रियोल बाबद रे से टाइम रे मैं डिस्कस कर देमी ट्यूबुलिन प्रोटीन अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट ओके सो ट्यूबुलिन प्रोटीन
that is the characteristic features of eukaryotic flagella. One of the example jenta ki amar suppose sperm dekhuchu, sperm ro amar kana thisi gude tail part present thisi jenta ki that is made up of this tubulin protein. Amar this one that is flagella like काम करूची जंता amar flagella help करसी movement रो लागी गुटे tail part present अच्छे जे कि flagella भलिया काम करसी, that is made up of सेनो amar काना थसी there is presence of a tubulin protein present. ओके एटा गला हमर flagella के नहीं करी तापरे हमें जाऊं ठीक है डीएनए बाबत डिस्कस करमा, दुई जनकर डीएनए बाबत डिस्कस करमा. प्रोकैरियोटिक सेल रो जदि डीएनए देखमा that is very simple, okay, without histone protein, without histone protein, without histone protein ताके कहसी naked DNA बोली करी कहा जासी, naked DNA बोली करी कहा जासी, and this is generally circular रहसी. okay DNA जो देखु छु this one suppose DNA हैला DNA केंदा अच्छे गुटे सर्किल भलिया अरेंज करी अच्छे, this one that is double stranded DNA, circular DNA, very simple structure. okay short length is the command, that is short length. but if you see the DNA of your eukaryotic cell or DNA, eukaryotic DNA that is very complicated one, this one is not simple one, this one that is complicated. okay and that is with histone protein, with histone protein, histone protein संगे associate है करी and with histone protein DNA के हमें काना कहसो आगरो डिस्कस करला, that is कॉल्ड chromatin, काना कहसी ताके chromatin बोली करी कहा जासी, with histone protein that is known as chromatin. okay but without histone protein that is known as naked DNA. but here in case of pure eukaryotic cell there is presence of histone protein with that DNA, chromatin present is see, and here generally DNA that is linear DNA, linear माने का लंबा ही किसी बात. okay and ये DNA रे जगह जगह DNA रे कहार round रे coil हेतिबा, histone protein round रे coil हेतिबा. okay and they have more length, length देखमा these are lengthy, that is high. okay and the believe करा जायसी जमा ह्यूमन रो जदी जतकी सेल अछन सब सेल रो डीएनए के जदी बाहर कर देला है सब डीएनए के जदी जॉइन कर देला देन वी कैन रीच द मून थ्रू आवर डीएनए. गोटे कहबार कथा के अछि जतकी भी डीएनए अछि सब के बाहर कर देला जुटे देला देन हमें डीएनए रे जदी चरमा बले मून नि के भी पहुंच जी पारमा हमर बॉडी रे हेतकी लंबा डीएनए प्रेजेंट अछि. but our DNA of your bacterial cell, DNA of your prokaryotic cell that is very short length, short size रो रहसी. okay DNA रो position और location जदी देखमा DNA टा केन जगह रे present थी in prokaryotic cell, prokaryotic cell रे DNA टा that is present in cytoplasm, location जदी हमें देखमा केन जगह रे DNA present थी, DNA that is present in cytoplasm, cytoplasm DNA टा हमर डायरेक्टली इटा सेल जदी हला सेल रे डायरेक्टली साइटोप्लाज्म रे DNA अछि. ओके इटा हमर साइटोप्लाज्म हला साइटोप्लाज्म रे डायरेक्टली DNA प्रेजेंट अछि. बट हमर यूकैरियोटिक सेल रे DNA टा कहार भीतर अछि, न्यूक्लियस रे भीतर, न्यूक्लियस रे भीतर काना अछि, दिस वन दैट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस रे भीतर अछि हमर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म रे हमर काना अछि देयर इज प्रेजेंस ऑफ आवर DNA. so DNA that is present in nucleoplasm, nucleoplasm inside the nucleus, but here freely DNA is present in the cytoplasm in case of your prokaryotic cell. okay तापरे देखो DNA नो हमर काना फॉर्मेशन है, DNA फॉर्मेशन नहीं परसे DNA नो DNA फॉर्मेशन और प्रोसेस का मैं काना कहसो रेप्लिकेशन. DNA रो DNA बनवा देखो इटा जदी हमर
बैक्टीरियल सेल हला सपोज दिस वन दैट इज द डीएनए हला ये डीएनए नो आउ गोटे डीएनए फॉर्मेशन हवा आउ गोटे कॉपी फॉर्मेशन हवा डीएनए नो डीएनए फॉर्मेशन हबार प्रोसेस के कहा जैसे काम लिखरी दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन वर्ड टा केनु असला रेप्लिका रु असला रेप्लिका माने कॉपी डीएनए तार गोटे कॉपी फॉर्मेशन करबा रेप्लिकेशन हेबा इन केस ऑफ योर प्रोकैरियोटिक सेल इन साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म रे हमर रेप्लिकेशन प्रोसेस ता हेबा बट हमर यूकैरियोटिक सेल जतले देखमा हमर डीएनए कहां न छे इनसाइड द न्यूक्लियस सपोज दिस वन दैट इज द डीएनए कहार भितरे अछि न्यूक्लियस भितरे तो न्यूक्लियस भितरे ही हमर डीएनए नो काना बनबा डीएनए बनबा सो रेप्लिकेशन प्रोसेस ता यूकैरियोटिक सेल रे केन हबा दैट इज इन न्यूक्लियोप्लाज्म ओके तापर देखो डीएनए नो काना फॉर्मेशन ही परसी आरएनए डीएनए नो आरएनए फॉर्मेशन और प्रोसेस के काना कहा जैसे ट्रांसक्रिप्शन okay suppose this one that is the cell here there is presence of our DNA suppose this part of the DNA that will make an RNA এটা কানা বললা RNA বললা DNA नो RNA बनবার प्रोसेस के कहा जैसे काम वाली क्रिया ट्रांसक्रिप्शन वाली क्रिया कहा जैसे this is called as transcription डीएनए नो आरएनए बनुचे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस द्वारा ट्रांसक्रिप्शन बा कहर जगह रहउचे केन जगह रहउचे दैट इज स्टिल इन द साइटोप्लाज्म ट्रांसक्रिप्शन केन होचे दैट इज इन साइटोप्लाज्म रहउचे बट यूकैरियोटिक सेल रे डीएनए केन होचे डीएनए केन होचे इनसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल रे दिस वन दैट इज द डीएनए डीएनए दैट इज इनसाइड द न्यूक्लियस तो डीएनए नो आरएनए भी केन बनबा न्यूक्लियस रे ही बनबा that means transcription process can have a transcription that will occur in a nucleus or inside the nucleoplasm okay but nucleoplasm रे बनला हमर आरएनए but आरएनए टा nucleoplasm ने नै रहे nucleoplasm रो बाहर के बाहरी असबा केन के साइटोप्लाज्म में के का हला जैसे क्वेश्चन असला का हला जे असबा आरएनए साइटोप्लाज्म में के बिकॉज आरएनए आसिकरी काना करबा प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस करबा एंड प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस करबार लागि ताके आगुटे सेल ऑर्गेनेल दरकार एसी जहा के कहा जैसी राइबोसोम बोली करी कहा जैसी राइट काना दरकार प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस रो लागि देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट राइबोसोम एंड राइबोसोम केनो थिबा दैट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इनो अच्छा मोर देखो ribosomes okay there is presence of ribosome here हमर इनबी साइटोप्लाज्म रे एक राइबोसोम थिबा राइट राइबोसोम अच्छे साइटोप्लाज्म राइबोसोम काना करबा राइबोसोम मिसिबा कहार संगे हेल्प नबा राइबोसोम आरएनए और राइबोसोम निजे निजे हेल्प करबे एंड सेनो काना बनबा प्रोटीन बनबा तो हमर न प्रोकैरियोटिक सेल रे राइबोसोम अच्छे साइटोप्लाज्म रे आरएनए भी अच्छे केनो साइटोप्लाज्म रे यू नो डीएनए हला एंड दिस वन सपोज मैं आरएनए के आउटे कलर रे कर दउ छ हमर दिस वन दैट इज आरएनए हला एंड आरएनए कहार हेल्प नबा राइबोसोम रो हेल्प नबा सपोज दिस वन दैट इज द राइबोसोम एंड इनु काना बनाबे दे विल मेक सम प्रोटीन इटा हमर काना बनाउछन प्रोटीन बनाउछ ओके हमर आरएनए रो काना बनबा प्रोटीन बनबा आरएनए रो प्रोटीन बनबा विद द हेल्प ऑफ व्हाट राइबोसोम ये प्रोसेस के कहा जैसे काम वाली करी ट्रांसलेशन तो नंबर ट्रांसलेशन प्रोसेस केनु हला दैट इज इन साइटोप्लाज्म किन जगह रहला ट्रांसलेशन प्रोसेस ता साइटोप्लाज्म रहे पर हमर यूकैरियोटिक सेल जते बेला में देखमा यूकैरियोटिक सेल जति देखु छु यूकैरियोटिक सेल रे एटा हला हमर डीएनए नु बनला कना आरएनए पर आरएनए काना करबा साइटोप्लाज्म के आबा राइट आरएनए असबा साइटोप्लाज्म देन आरएनए साइटोप्लाज्म में के इथिन लगे असबा बिकॉज़ साइटोप्लाज्म रे हमर काना प्रेजेंट अछि देयर इज प्रेजेंस ऑफ योर राइबोसोम इनो अछि
ओके सो दिस वन राइबोसोम एंड आरएनए मिसिके इनु काना बनाबे प्रोटीन बनाबे ओके केनो प्रोटीन सिंथेसाइज हबा साइटोप्लाज्म इनो हमर प्रोटीन सिंथेसिस केनो हितिला साइटोप्लाज्म रे इनो भी प्रोटीन सिंथेसिस ता साइटोप्लाज्म रे हबा इनो भी ट्रांसलेशन प्रोसेस इनो भी ट्रांसलेशन प्रोसेस ता हबा इन साइटोप्लाज्म बट डिफरेंस काना देखो इनो जन आरएनए आसबा साइटोप्लाज्म नेके आरएनए एक्चुअली थिला केन जगह आरएनए थिला हमर कहार भीतर न्यूक्लियस भीतर थिला न्यूक्लियोप्लाज्म रे थिला न्यूक्लियोप्लाज्म रु जतबेले साइटोप्लाज्म नेके आसबा आरएनए ऑटोमेटिक जदी आसी गला हमर इनो काना अछन न्यूक्लियस एंजाइम माने अछन इनो देखो किछटा एंजाइम जुगी करी बसथिबे न्यूक्लियस एंजाइम ओके न्यूक्लियस एंजाइम कहा के भांगी दबा न्यूक्लिक एसिड के आरएनए गोटे काना न्यूक्लिक एसिड राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना तमर आरएनए के जुगी करी बसथन केन माने न्यूक्लियस एंजाइम माने जुगी करी बसथन आसबा ताके डिस्ट्रॉय कर दमो बट आरएनए इज वेरी क्लेवर यूकैरियोटिक सेल केस रे आरएनए जतबेले न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म निके आसबा से काना करबा तार स्ट्रक्चर के टिके मॉडिफाई कर देबा सो दैट सदा के केन माने चिन्हने परन केन माने रिकॉग्नाइज करने परन दैट इज योर न्यूक्लियस एंजाइम हला एटा देखो न्यूक्लियस हला इनो जतबेले डीएनए हला डीएनए नु बनला हमर काना आरएनए बनला आरएनए काना करबा ई आरएनए टा मॉडिफाई हे आरएनए केते मॉडिफाई हवा तार गुटे कैप लगाबा तार गुटे टेल लगाबा तापरे ये बाहर के बाहर बा माने ट्रांसक्रिप्शन परे परे काना हवा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ट्रांसक्रिप्शन परे परे गोटे मॉडिफिकेशन हवा जहा के क्वालिटी से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन राइट देखो डीएनए नो आरएनए बनला ताके कहला में काम बोली करी ट्रांसक्रिप्शन बोली करी कहला बट ट्रांसक्रिप्शन परे परे तार कान हला मॉडिफिकेशन हला कान मॉडिफिकेशन हला गुटे एटे लगाला गुटे टेलटे लगाला ओके ताके कहला में काम बोली करी ताके कहला में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन okay but what is post transcriptional modification in case of your eukaryotic cell after formation of rna has to modify its structure okay for what because in the cytoplasm there is presence of nucleus enzyme to get protection from the nucleus enzyme it has to protect itself by forming some kind of structures ताकि कहना पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कांसेप्ट दैट इज not seen in case of your prokaryotic cell prokaryotic cell रे जे देखमा post transcriptional modification देखबार के मिलसी के नहीं ओके ट्रांसक्रिप्शन परे और किछ मॉडिफाई नहीं बुझी पालो एटा गला मोर transcription translation as well as replication and the position or the location of the dna इटा में डिस्कस करला डिफरेंस बिटवीन द prokaryotic and eukaryotic cell अब गोटे छोटिया रही जे डिफरेंसेस that is regarding the ribosomes यहाँ दे मैं राइबोसोम बाबत रे डिस्कस कर देला बट राइबोसोम के हमें इग्नोर कर देथिला राइबोसोम गोटे काने that is a non membrane bound cell organelle this is not having any membrane तार किनसे membrane नहीं था तार separate membrane नहीं ना so that is called as what that is your non membrane bound cell organelle non membrane bound cell organelle okay non-membrane bound cell organelle this is made up of what this is only made up of protein and RNA कहार द्वारा बनती सी प्रोटीन और आरएनए द्वारा बनती सी सतिन लगी इधर के क्वेश्चन राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन और राइबोसोम के क्वेश्चन काम लिख रही राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बोली करी कहा जैसी राइबो न्यूक्लियो व्हाट असला फॉर द आरएनए बिकॉज़ आरएनए रो फुल फॉर्म काना मोर राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए द्वारा बनी चाहिए दैट इज द राइबोसोम ओके both prokaryotic cell as well as eukaryotic cell they have the ribosome but difference काना दे हमर दुईटा टाइप रो राइबोसोम देखबार के मिलसी one is the 70th type ribosome and another one that is the 80th type ribosome okay हमर prokaryotic cell रे
केन टाइप रो राइबोसोम देखबार के मिलसी 70s टाइप ओके देखो 70s टाइप का 80s टाइप का मैं सेपरेट लेक्चर डिस्कस करी सारी छ माइक्रोबायोलॉजी पर्सन okay so that I want to say the microbiology lecture attend karo you will find what is 70s and what is 80s just me jagare author remind कर दो छे s रो माने हला that is sedimentation coefficient or this is on the regarding the name or by the name of the another scientist that is Sadwork okay Sadwork रो नाम हिसाब इतके S बलिकरी भी दिया जाय छै Sadwork यूनिट बलिकरी भी कहा जाय छै according to the name of the scientist Sadwork 70s माने काना इता सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बेस करके असला माने सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट माने काना देखो ये कांसेप्ट है एस सेंट्रीफ्यूगेशन टाइम रे देखि तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन पाथर लैब मान को अवेलेबल छै सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन रे जदी कैंसी भी मॉलिक्यूल्स मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स जदी हम पके दउ से नंबर का हवा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन रे हमर गोटे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हवा एंड ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट हमर सेल माने ऑल द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जहां प्रेजेंट थिबा से मिक्सचर रे से माने तकर वेट एज वेल एज तकर क्वांटिटी हिसाब से सेपरेट हेतल जिबे डिफरेंट लेयर्स एंड तले बस्तेल जिबे ओके से जन तले बस्तेल जिबे ताके क्वाइसी सेडिमेंटेशन बोलिकरी कुहा जाय ओके तो हमर जन राइबोसोम अछि दुटा टाइप रो राइबोसोम नाला 70s और 80s 70s टाइप राइबोसोम माने कना इतके सेडिमेंट करबा लगी लगभग 70 into 10 to the power minus 13 सेकंड एक्चुअली 1s रो वैल्यू केते है 1s रो वैल्यू हला 10 to the power minus 13 सेकंड ओके जिनसे भी स्ट्रक्चर नला सतके जदी 70 into 10 to the power minus 13 सेकंड लागला तो तार सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट केते 70s तब और प्रोकैरियोटिक सेल रो साइटोप्लाज्म रो राइबोसोम मान को बाहर करा गला सता के सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन रे पके दिया गला जतेला ऑन कर दिया गला मशीन के केते टाइम लागला सेडिमेंट करबार लगी तले 70 into 10 to the power minus 13 सेकंड लागला तो सता के कहमा 70s टाइप राइबोसोम बोली कि कहमा हेन तो हमर यूकैरियोटिक सेल जते बोले देखु छु यूकैरियोटिक सेल रो जन साइटोप्लाज्म अच्छे साइटोप्लाज्म रे जन राइबोसोम अच्छे इतक सेडिमेंट करबा लेके केते टाइम लागसी 80 into 10 to the power minus 13 सेकंड से ताकि कहम हमें 80s टाइप राइबोसोम बट और यूकैरियोटिक सेल के से माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे एंड माइटोकॉन्ड्रिया भीतर भी काना अच्छे राइबोसोम अच्छे जे हमर क्लोरोप्लास्ट ला सपोज क्लोरोप्लास्ट भी हमर काना प्रेजेंट थी राइबोसोम माने प्रेजेंट थी ओके so mitochondria chloroplast imantar case region ribosome thisi that is your 70s type in mitochondria in chloroplast la mitochondria la henogen type ro ribosome thisi that is your 70s type mane eukaryotic cell case re both 70s as well as 80s do hi type of ribosomes present ache but amar prokaryotic cell jodi dekhma only 70s type ribosome present ache okay so this is all about the today's discussion if any doubt you have to write in the comment section please like share and subscribe our channel thank you